Hello everyone, welcome back. Today I am here with one important topic in plant physiology, that is nitrogen metabolism. In this lecture we will discuss about important functions of nitrogen, and what are the various sources of nitrogen, how biological nitrogen fixation occurs, and the sites of nitrogen fixation in detail. So let's start. Firstly, introduction. As we know that nitrogen is an important component of amino acids, nucleic acids, and plays an important role in metabolic activities. So in leaves, chlorophyll also contain nitrogen. In chlorophyll, as we know that chlorophyll is made up of a tadpole shaped structure, जिसमें कि जो head है that is made up of porphyrin and tail is made up of phytol. So जो porphyrin head होता है chlorophyll का, उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, और दैट इज जॉइंड विद द 4 पायरोल रिंग्स विच कंटेन नाइट्रोजन. सो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन, और क्लोरोफिल का फंक्शन है टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड. देन nitrogen is important for the development of plant tissue. It regulates the normal growth and functioning of the plant. As we know that just cellular structures are made up of proteins, so protein का बहुत important role रहता है plant की growth और development में. Then in grains also contain proteinaceous layer. अगर हम cereals की बात करते हैं तो उसमें present होती है protein की layer that is known as aileron layer. And protein is a substance which makes up the living matter, जो कि living matter को synthesize करता है, और protein store भी होती हैं legumes में and in some other seed plants जिसमें protein as a stored food material present होता है. And roots, nitrogen is found in proteins and enzymes in the roots, and they helps the nutrients and water to be taken up into the plant. So roots का important role रहता है absorption of mineral and water. So as we know that nitrogen is required in large quantity and is a limiting factor in crop productivity. Limiting factor means the factor which decreases the yield and have main effect on the crop productivity. So अगर nitrogen soil में कम है और सारे के सारे और जो nutrients हैं they are available in plenty or in large amount, but nitrogen deficient है, so जो crop की productivity है वो affect होती है, and that's why this nitrogen acts as a limiting factor and is required for the metabolism and growth of the plant. So it is important for metabolism and growth of the plant. And if we talk about the weight or percentage by weight in of proteins or nitrogen in the plants, so dry weight of nitrogenous organic compound is 6 to 25% of the total dry weights of the plant. अगर total dry weight की बात करते हैं plant में, तो उसमें 6 to 25% जो weight है that is of nitrogenous organic compounds. And most importantly, it is the main component of amino acids, and amino acids are the building blocks of proteins. It is not available to the plants for any use if we talk about molecular nitrogen. So जो molecular nitrogen है ये as it is plants के लिए available नहीं होता यूज़ करने के लिए, और plants के पास कोई ऐसी machinery नहीं है जिसकी help से ये molecular nitrogen को fix कर सके. So they can absorb nitrogen only in the form of salts. जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्ट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते पाते हैं प्लांट्स. नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर द अपटेक ऑफ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर अमोनियम आयन और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. सो अमंग दीज टू फॉर्म्स नाइट्रेट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म विच इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. सो जो मोस्ट अवेलेबल और फेवरेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की दैट इज नाइट्रेट, जिसको प्लांट्स ईजिली एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. Next comes functions of nitrogen. So nitrogen plays an important role in formation of amino acids, which are the building blocks of proteins in plants and animals and humans also. So protein बनाने में nitrogen का important role होता है. Then जो भी food crops है जिनको हम grow करते हैं, they are present in the food crops and are the vital components for the plants because it is a major component of chlorophyll. जो chlorophyll है उसका एक major component है nitrogen, और chlorophyll help करता है photosynthesis में, by which the plant synthesizes their food by converting light energy into the chemical form of energy. Then it forms approximately 80% of the air that we breathe, and
but that form is not available for the plants. So plants cannot use that molecular form, that is N2 form. So the vast majority of crops, they require additional mineral nitrogen as a fertilizer to reach their yield potential, to get maximum yield. So extra source of nitrogen भी चाहिए होता है plants को, crop plants को as a fertilizer, ताकि वो अपनी maximum yield produce कर सके. And nitrogen is significant component of nucleic acids like DNA and RNA. इसमें जो nitrogenous bases होते हैं which forms the genetic material, that is DNA और RNA nucleic acids को बनाते हैं, so that are formed by nitrogen also. Or DNA, as we know that it is the blueprint of life and helps in reproduction and transfer of information from one generation to next generation. Then finally, the rate of plant growth and its protein contents are directly related. So as we can say that more the amount of protein in the plant, higher will be the rate of plant growth. ज़्यादा plant growth होती है जब amount of protein ज़्यादा present होगा, और ये depend करता है availability of nitrogen in the soil. So protein content depends upon the nitrogen availability in the soil. Firstly, as we know that nitrogen helps in synthesis of amino acids, which are the building blocks of proteins. Then it helps in formation of protoplasm. As we know that protoplasm is the physical basis of life. So proteins बनाती हैं इस life forming matter protoplasm को. Then nitrogen is an important component of nucleic acids, जो genetic material है उसका important component है. Then nitrogen is also an important component of chlorophyll, और chlorophyll help करता है formation of plants food, that is carbohydrate, through the process of photosynthesis. अगर nitrogen की deficiency हो जाती है, so plants show the symptom of chlorosis, mostly leaf chlorosis, that is yellowing of leaves. If nitrogen is present in sufficient amount in the soil, so plant exhibits vigorous growth, means fast growth होता है अगर nitrogen sufficient amount में present है soil में. So these are the various functions of nitrogen in plants. The main sources of nitrogen are atmosphere and soil. So ये दो sources हैं जो nitrogen के sources हैं, main sources. और जो plants होते हैं वो molecular nitrogen को absorb नहीं कर सकते हैं directly. So this nitrogen is firstly converted into the form which is absorbed by plants through soil with the help of roots. इसमें बहुत सारे steps involved in that we will discuss in upcoming slides. So the main sources of nitrogen are atmosphere and soil. In atmosphere it is present in the molecular form, that is N2, और इसमें जो nitrogen atoms हैं वो एक दूसरे से bonded होते हैं with the help of triple bonds, so it requires a lot of energy to break these bonds. While in soil it may be present in inorganic form, like we have nitrite NO2 negative, then nitrate NO3 negative and ammonia. So इस form में ये soil में present हो सकते हैं, which are the inorganic forms, and they may be present and it may be present in the organic form, like we have amino acids, then proteins. In addition to this we have amides and urea. So ये organic form में भी present हो सकता है soil में, और inorganic form में भी present हो सकता है. Then we have two types of nitrogen which are available, that is molecular nitrogen. This is basically an inert gas. जो molecular nitrogen है ये inert gas है, ये किसी के साथ react नहीं करता है. It is free form of nitrogen and is an inert gas, so it is not reactive gas. React नहीं करता है ये. If we talk about its chemical properties, atomic number nitrogen का 7 होता है, और जो इसका atomic weight है that is 14.007, and its structure is hexagonal crystal structure. Melting point is -210 degrees Celsius, while its boiling point is -196 degrees Celsius, that is the liquid nitrogen temperature. और ये अगर हम एटमॉस्फेयर में गैसेस की कंपोजिशन की बात करते हैं, so it forms approximately 78% of the air content, and its electronic configuration is given here. So this is the basic information regarding this nitrogen. It constitutes 76% of air by weight and 78% of air by volume, and it cannot diffuse in and out of cells through stomata. जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के ना ही ये अंदर डिफ्यूज कर सकता है और ना ही स्टोमेटा के थ्रू
बाहर जा सकता है। देन सेकेंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ अमोनिकल नाइट्रोजन, और ये जो फॉर्म होती है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है। प्लांट्स इस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है नाइट्रोजन को। Ammonia, that is NH3, is a fixed form of free nitrogen, atmospheric nitrogen. So firstly जब भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, so ये अमोनिया की फॉर्म में फिक्स होता है। This form gets easily mixed in the soil. ये जो फॉर्म है easily mix होती है सॉइल के साथ and can be absorbed by plants. Nitrogen can be obtained by three means, तीन major मेथड्स हैं और नेचर में मेथड्स हैं जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्स होता है, दैट इज़ फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। सो द फिजिकल मेथड इंक्लूड इलेक्ट्रिकल और लाइटनिंग और थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट में जो लाइट एनर्जी होती है वो ब्रेक करती है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को। देन दिस नाइट्रोजन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्राइट जो कि इस रेन के साथ सॉइल में आता है और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। दैन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस नेम्ड एज हैबर प्रोसेस। एंड द थर्ड वन दैट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इन्वॉल्व सर्टेन माइक्रोब्स दैट हेल्प्स इन fixing of this atmospheric nitrogen into ammonia that we will discuss in detail. Then this ammonia is converted into nitrite with the help of bacteria. Then this nitrite is again oxidized into nitrate, and this is the form which is readily available for the plants. In addition to this, nitrate can be converted back into the nitrogen by the process of denitrification, जिससे कि नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं denitrification. This is also carried out by some bacteria like we have Pseudomonas and Thiobacillus. After the plants absorb this nitrate, it will form the biomass of plant. Then plants are consumed by animal, that helps in formation of animal biomass. Then after the death and decay of animal and plant biomass, it will give rise to the ammonia, that is NH3, and this process is known as ammonification. ये भी कुछ एक माइक्रोब्स हैं जो डेथ के बाद डिके करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनटू सिंपलर वन। सो उस प्रोसेस में अमोनिया रिलीज होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन. सो देयर आर थ्री वेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल. Next comes nitrate nitrogen. Firstly, we have discussed about the molecular nitrogen, then ammonical nitrogen. Third one is the nitrate nitrogen. So this nitrate is formed by the nitrifying bacteria like Nitrosomonas, which oxidizes and converts the ammonium ion into nitrites. जो अमोनियम को या अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, NO2 नेगेटिव में, in the primary stage of nitrification, and this process is known as nitrification. Then second bacteria, that is nitrobacter, that oxidizes and converts the nitrite into nitrates, जो कि नाइट्राइट को, that is NO2 नेगेटिव को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, and this is the form which is readily available for the plants. Ammonia is toxic to the plants, so plants अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, so it is converted into usable form. तो ऐसी फॉर्म में जो टॉक्सिक नहीं है और प्लांट्स जिसको यूज़ कर पाते हैं उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं. And nitrate is most preferred source of nitrogen and is readily available for the plants in soil. Atmospheric nitrogen. As we know that there are various unique methods of nitrogen fixation, and each method results in the formation of ammonia. जो भी end product है सभी methods का, उसका end result बनता है अमोनिया, और अमोनिया को फिर फिक्स करते हैं plants किसी और forms में, which is utilized in various ways. So there are basically three processes for the conversion of atmospheric nitrogen into ammonium ion, which are atmospheric nitrogen fixation. The first method is non-biological nitrogen fixation, that is physical method of nitrogen fixation, which involves lightning or UV radiation. As we know that this molecular nitrogen is formed by when two nitrogen atoms combines at standard temperature and pressure with the help of triple bond to form this molecular nitrogen. और इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए ताकि ट्रिपल बॉन्ड टूटे एंड दे आर सेपरेटेड, देन दे विल कंबाइन विद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो केमिकल मेथड्स है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड और उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए. सो लाइटनिंग और यूवी रेडिएशंस दे कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी
जिससे वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लाइक वी हैव NO नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड. Then they dissolve in rainwater and forms the nitrates which are carried to the earth. और वो जो nitrates हैं वो earth में आते हैं with the help of rainwater. And this process, that is a physical method of nitrogen fixation, it accounts for about 10% of total atmospheric nitrogen fixation. तो इससे लगभग 10% जो टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन है पर एनम में वो 10% इस मेथड से होता है. This image shows how this nitrogen fixation occur by physical method, that is non-biological nitrogen fixation. Here this molecular nitrogen combines with oxygen और before that lightning से sufficient energy मिलती है जिससे नाइट्रोजन का molecule break होता है. Then it combines with oxygen to form nitric oxide. अब जो nitric oxide है, it will undergo again the oxidation process. It combines with oxygen to form nitrogen peroxide. Then this nitrogen peroxide will combine with rainwater to form nitrous acid and nitric acid. ये rainwater के साथ आते हैं earth surface में, and then they are converted into various salts of nitrite and nitrate जो कि plants के लिए available होते हैं. Then this is the flow chart which shows various method of nitrogen fixation. Broadly, दो ब्रॉड मेथड्स हैं. वन जिसमें एबारिक मेथड है, इट मीन्स जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. सेकेंड इज द बायोटिक विच इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. फर्स्टली एबारिक, सो इट इन्वॉल्व्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फिजिकल मेथड विच इंक्लूड थंडर एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. सेकेंड कम्स इंडस्ट्रियल मेथड जिसमें मोस्ट कॉमन जो मेथड है दैट इज हैबर-बॉश प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें लार्ज स्केल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है. देन सेकेंड मेथड इज द बायोटिक मेथड. इट इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वन आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट मीन्स ये किसी भी प्लांट और किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. सेकेंड इज सिम्बारिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो किसी और प्लांट या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. इन फ्री लिविंग nitrogen fixing microbes, it include aerobic bacteria. It means they require oxygen for their metabolism, like we have azobacter. Anaerobic bacteria include rhodospirillum. Then we have blue-green algae which include nostoc, anabena, etc. In symbiotic bacteria or microbes, it include root nodule forming bacteria like we have rhizobium and bradyrhizobium. Rhizobium mainly forms association with the leguminous plants. Most of the leguminous plants, bradyrhizobium is lives in association with the glycine max, that is soybean. Then we have stem nodules. They are formed by azorhizobium. There is one plant which is a non-leguminous plant in which this rhizobium forms the nodules, like, and the name of plant is Parasponia. And the stem nodules occur in plant named as Sesbania rostrata. Second method is the chemical nitrogen fixation. So at temperature of 600 degrees Celsius and a very high atmospheric pressure, that is 35 to 100 megapascal, in the presence of an iron-based catalyst, this atmospheric nitrogen can be combined together to reduce nitrogen, that is atmospheric nitrogen, into ammonia. So ये जो conditions हैं ये चाहिए industrial fixation के लिए. High temperature चाहिए, that is 600 degrees Celsius. Then it require very high atmospheric pressure of 35 to 100 megapascal. In the presence of a catalyst, that is the iron-based catalyst, जो atmospheric nitrogen है उसको हम अमोनिया में convert कर सकते हैं under these conditions. So it is an artificial way of nitrogen fixation through a process named as Haber-Bosch process. So there were two scientists. Here in this case, nitrogen from air, it contains the ratio of nitrogen and hydrogen in a 1:3 ratio by volume. Then hydrogen from the natural gas, then they combine under these conditions in the presence of iron catalyst and will give rise to the ammonia. Ammonia को फिर store करते हैं in liquid form. So Haber-Bosch process is also known as Haber-ammonia process. इसे हाइबर अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं और सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ डायरेक्टली सिंथेसाइजिंग अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. डायरेक्टली इससे हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के हेल्प से अमोनिया बनाते हैं. एंड दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय जर्मन फिजिकल केमिस्ट फ्रिट्ज हैबर. ये जो मेथड है ये सबसे पहले डेवलप किया था फ्रिट्ज हैबर ने. ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1918 फॉर दिस वर्क, which
मेड द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इकोनॉमिकली फिजिबल, जिसकी वजह से जो अमोनिया का प्रोडक्शन है वो ईजी हुआ. दिस मेथड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लार्ज स्केल प्रोसेस यूजिंग अ कैटलिस्ट एंड हाई प्रेशर मेथड बाय कार्ल बॉश. सो इसी मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कार्ल बॉश ने ताकि हम लार्ज स्केल में अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकें. एन इंडस्ट्रियल केमिस्ट was basically an industrial chemist and who again won the Nobel Prize for this in 1931 jointly with another person named as Friedrich Bergius. तो इन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया है फ्रेडरिच बर्गियस के साथ फॉर हाई प्रेशर स्टडीज. सो दिस इज बेसिकली द ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हैबर एंड बॉश. So this is the industrial process of nitrogen fixation and it accounts for about 30% of total atmospheric nitrogen fed per annum. So fixation इससे जो होती है that is approximately 30% and in physical method there was only 10% fixation per annum. So this form of ammonia can be directly used as fertilizer or can be converted into many types of fertilizers into other types of fertilizers such as urea and ammonium nitrates. So या तो हम इस फॉर्म ऑफ अमोनिया को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर और किसी और फॉर्म में. नेक्स्ट थर्ड कम्स द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. एज द नेम इंडिकेट, जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये होती है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मेनली इंक्लूड्स सम माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स हैं वो इसमें हेल्प करते हैं. सो द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय बायोलॉजिकल मीन्स is only in certain microorganisms like bacteria and archaea bacterias. So the bulk of nitrogen is about 60% or 50 to 190 million metric tons is fixed annually by bacteria and cyanobacteria and actinomycetes. So actinomycetes are the filamentous bacteria. So जो bulk of nitrogen है वो biologically fix होती है. approximately total जो fixation की बात करें तो 60% fixation होती है with the help of these microbes. And it figures about 50 to 119 million metric tons per annum. और ये जो fixation होती है it is done with the help of bacteria, cyanobacteria and actinomycetes which are known as filamentous bacteria. The phenomenon of conversion of free nitrogen into soil nitrogen is called nitrogen or dinitrogen fixation. सो जब हम फ्री नाइट्रोजन दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसको कन्वर्ट करते हैं सॉयल नाइट्रोजन में विच इज़ एब्सॉर्ब बाय प्लांट और विच इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट्स, दिस मेथड इज नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन और डाइनाइट्रोजन फिक्सेशन. So these microorganisms may be free living that we have already discussed or may form symbiotic or asymbiotic association with other organisms such as higher plants for the fixation of nitrogen. Bacteria are widely distributed in soil, water, and the cyanobacteria in pediphiles or at the surface of stagnant water. So ये जो bacteria हैं, they are distributed in soil, water, और जो हमारे पास blue-green algae है, they are present in pediphiles also, which enhances the fertility of pediphiles. और surface of जो stagnant water है, रुका हुआ पानी उसके surface के ऊपर भी ये present होते हैं. So microbes which fix nitrogen in association with the roots of cereals and grasses are called associative symbiotic nitrogen fixation. इसे कहते हैं associative symbiotic nitrogen fixation. And biological nitrogen fixation requires a great amount of energy. जो nitrogen fixation है as we have already discussed, it is a energy consuming process because जो molecular nitrogen है इसके बीच में triple bond होता है और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए. सो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है it is very expensive process. It requires a lot of energy in the form of ATP and also a set of complex enzymes. इसके अलावा इसे साथ में चाहिए कुछ एक complex enzymes. The first stable product of process is ammonia and it is quickly incorporated into proteins and other nitrogenous organic compounds. जो अमोनिया बनता है that is the first product, उसको इमीडिएटली प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और कुछ और इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती कैसे है. सो द रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया दैट इज NH3 by microorganism is known as biological nitrogen fixation. Here the molecular nitrogen combines with the hydrogen in the presence of
high energy molecules, like we have ATPs, so 16 ATPs are used to form two molecules of ammonia. Then we have 16 ADP, 16 inorganic phosphate and hydrogen. So this is the chemical reaction which is involved in formation or fixation of atmospheric nitrogen into ammonia. The reaction is catalyzed by an oxygen-sensitive enzyme, nitrogenase. This is a very important enzyme which is involved in nitrogen fixation and is highly sensitive to oxygen. It requires energy in the form of ATP molecules that we have already discussed, although ammonia, that is NH3, is the direct product of reaction and is quickly ionized into ammonium ion. Or quickly ionized hota hai ammonium ion ki form mein. The complex process is carried out by nitrogen-fixing bacteria present in the soil. The microorganisms fixing atmospheric nitrogen are known as diazotrophs and the phenomenon is known as diazotrophy. So ऐसे living organisms, microbes, जो atmospheric nitrogen को fix करते हैं उन्हें diazotroph कहते हैं और इस process को बोलते हैं diazotrophy. This can be classified into two types. ये जो process है इसको दो types में हम divide. First is the asymbiotic or free living microorganisms which helps in fixation of atmospheric nitrogen. So it includes microorganism which lives freely or staying out of plant cells. So ये plants के साथ association में नहीं रहते हैं, independently fix करते हैं nitrogen को. And performed by aerobic and anaerobic bacteria which include blue-green algae, cyanobacteria and chemosynthetic bacteria which are free living and some free living fungi. Firstly, aerobic bacteria. It means they require oxygen for their metabolism. इसमें भी जो first category, that is photosynthetic aerobic bacteria which include chlorobium and chromacium. So ये है हमारे पास photosynthetic aerobic bacteria. Next comes non-photosynthetic aerobic bacteria which include azobacter, azomonas, Bajornikia and Durexia. So ये है bacteria जो हैं aerobic non-photosynthetic bacteria. Next category is anaerobic bacteria. It means they do not require oxygen for their metabolism. Firstly, photosynthetic anaerobic bacteria, it includes rhodospirillum. Then non-photosynthetic anaerobic bacteria which include clostridium. So ये हैं कुछ एक microbes जो independently और free living है, nitrogen fix करते हैं. Next, second class is chemosynthetic bacteria. It includes D-sulfovibrio. Then comes blue-green algae or cyanobacteria which helps in fixation of nitrogen. These are again of two types. One is heterocyst bearing blue-green algae which include nostoc, anabaena, rivularia, calothrix. As we have already discussed, nostoc एक blue-green algae है और इसमें कुछ cells होते हैं बीच में which are thick-walled cells, और ये जो thick-walled cells होते हैं इन्हें कहते हैं heterocyst and they are involved in fixation of nitrogen because they contain enzyme nitrogenase. So this structure, this is nostoc, और ये जो cells हैं thick-walled cells, इन्हें कहा जाता है akinete heterocyst. इन्हें कहते हैं heterocyst and this is the site of nitrogen fixation in case of blue-green algae. So दो categories हैं BGA की, एक है heterocystis means जिसमें heterocyst present है और दूसरी category जिसमें heterocyst present नहीं होता है. Second is non-heterocyst bearing BGA which include Oscillatoria, Glyocapsa, Ligbia and Plactonema. So these are the non-heterocystous blue-green algae. Fifth class which include free-living fungi. So free-living fungi like we have yeast and Pullularia. So these are the fungus which are these are the fungi which are involved in nitrogen fixation. And the nitrogen fixing activity of free-living or non-photosynthetic aerobic bacteria is strongly depends on the favorable moisture conditions, oxygen and source of organic food. So ये requirements हैं ऐसे microbes की जो nitrogen को fix करते हैं. Anaerobic representative like we have Clostridium or Clostridium which predominates in the grasslands, और ऐसे एरिया जो water lodged होते हैं मीन्स पानी से घिर रहते हैं because जो water है water में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत कम होता है. So ये जो microbes है anaerobic microbes है इसमें nitrogen fix करते हैं. So water-lodged soils oxygen supply to the bacteria is severely restricted. जो water-lodged condition है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत restrict हो जाती है इन microbes को, और इस condition में ये नाइट्रोजन को fix कर पाते हैं. Next comes symbiotic nitrogen fixing microorganisms. As the name indicates, it means they lives in association with other plants or other organism.
Some nitrogen fixing organisms develops loose or symbiosis with higher plants, like we have Acetobacter and sugarcane. So जो Acetobacter है, it is an inoculum जो कि यूज़ किया जाता है sugarcane को ग्रो करने के लिए, Acetobacter, और इस तरह की एसोसिएशन को बोलते हैं एसोसिएटिव सिम्बायोसिस. और establish a long term relationship with a specialized structure on their host. और इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, और एसोसिएशन होती है इसमें राइजोबियम की. The association between bacteria and the host is ecological and mutually beneficial to both the partners, and the free nitrogen fixation by such organism inside the host is symbiotic nitrogen fixation. और इस तरह की जो फिक्सेशन है नाइट्रोजन की उसे कहते हैं symbiotic biological nitrogen fixation. It is of three following types. First one, through nodule formation in leguminous plants, then through nodule formation in non-leguminous plants, and the third one is nitrogen fixation through non-nodulation, जिसमें कोई भी nodules नहीं बनते. So there are three ways by which nitrogen fixation occur in the plants by microbes. So first category that include nitrogen fixation through nodule formation in leguminous plants. It includes genus Rhizobium mainly. जो Rhizobium genus है इसको ये include करता है. It establishes themselves inside a specialized structure जिन्हें कहते हैं nodules, root nodules. So this root system और जो इसके साथ associated soil का area है इसे बोलते हैं rhizosphere. इसमें बहुत सारे microbes होते हैं. Only Rhizobium is able to form the association with the leguminous plants. ये हम पढ़ेंगे host specificity in detail में. So Rhizobium, this bacteria is responsible for nodule formation in leguminous plants of the family Leguminaceae or Fabaceae. They live freely in the soil but fix nitrogen only inside the nodules. ये freely live करते हैं soil में but nitrogen को fix तभी करेंगे when they form association with the leguminous plants. So this photograph shows these tumor-like structures, और ये जो tumor-like structure है इन्हें कहते हैं root nodules, और इसके अंदर होता है nitrogen fixation. For example, we have a species that is Rhizobium maliloti. It forms association with the plants like we have Malilotus. This is the photograph which shows Malilotus and Medicago, and this photograph shows the photograph of Medicago. Then we have another species that is Rhizobium trifoli, और ये association show करता है trifolium के साथ. This is the photograph of trifolium. Next, Rhizobium leguminosarum, which is the most common form of Rhizobium, the most common species. It forms association with Vicia. Then Lethyrus, which is sweet pea, and Lens, that is Lens culinaris. These are the seeds of Lens culinaris. तो इनके साथ association show करता है Rhizobium leguminosarum. Then we have Rhizobium phaseoli, which shows association with Phaseolus. This is the photograph which shows Phaseolus. Then we have Rhizobium japonicum, और ये association show करता है glycine के साथ, vigna के साथ, और Arachis hypogea के साथ. So Arachis hypogea is basically the groundnut. Then we have second class of bacteria, that is Bradyrhizobium, or Bradyrhizobium japonicum is the most common bacteria or rhizobium, we can say, that forms association with the soybeans or glycine max, which is the botanical name of soybean, glycine max. So glycine max के साथ ये association show करता है. And this is the photograph which shows soybean root system, and these are the nodules. And when we cut nodules, इसके अंदर हमें pinkish color का area दिखाई देता है, और ये जो पिंक कलर होता है it is due to the presence of one pigment which is known as lag hemoglobin, और ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट फॉर द बैक्टीरिया फॉर द एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेज. Next bacteria is Azorhizobium. Azorhizobium colinodens. Colinodens means stem. Is a stem nodule forming symbiote in Sesbania. So ये बनाता है stem nodule Sesbania में. And this is the photograph which shows these tumor-like structures जिन्हें बोलते हैं stem nodule. और ये next comes nitrogen fixation through nodule formation in non-leguminous plants. Means nodules तो बनेंगे but legume plants में नहीं, other than legume plants.
So Frankia is the most common actinomycetes filamentous bacteria which forms nodules with non-leguminous angiosperms, like we have elder, that is ulmus species, then C. buckthorn, and these are the nodules which are formed with non-leguminous plants. Then this is the photograph which shows elder. This is the photograph elder, that is ulmus species. Then C. buckthorn, जिसका botanical name है हिपोफेई species, and casuarina. So इन angiosperms के साथ association show करता है Frankia. Then root nodules in Podocarpus, which is a जिम्नोस्पर्म, ये एक जिम्नोस्पर्म है, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज करते हैं इसको, इसके साथ एसोसिएशन शो करता है एंड फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स. देन राइजोबियम, as we have already discussed, it forms association with leguminous plants. So there is one plant that is Parasponia, which is the only non-leguminous plants जिसके साथ राइजोबियम एसोसिएशन शो करता है. This is the photograph which shows Parasponia, and these are the nodules which are present in Parasponia. So next comes leaf nodules, which are formed by bacteria Klebsiella. Bacteria है Klebsiella जो leaf nodules बनाता है in genus Sciotira species. Sciotira species, this is the photograph which shows Sciotira, और इसमें जो leaf nodules हैं, they are formed by this bacteria that is Klebsiella. And there is another bacteria which is named as Burkholderia, और ये बनाता है leaf nodules in Pavetta zimmermanniana. So this is the plant Pavetta zimmermanniana, इसमें ये leaf nodules बनाता है. Next comes the third class, that is nitrogen fixation through non-nodulation, जिसमें nodules बनते ही नहीं है. So this association is termed as pseudosymbiosis. This is pseudosymbiosis कहते हैं. And the examples are lichens. As we know that lichens are formed by association of blue-green algae and fungi. Then we have anthoceros, which is a bryophyte. इसमें भी जो blue-green algae है, like we have nostoc, that resides inside the mucilage cavities on the ventral side of the thallus. So this is anthoceros, commonly known as hornwort. इसे commonly hornwort कहा जाता है. It is a bryophyte. और इसमें जो mucilaginous cavities होती हैं इसके thallus में, उसके अंदर ये algal colonies present होती हैं. ये प्रोवाइड करती हैं नाइट्रोजन प्लांट को, और बदले में जो प्लांट है वो इसको प्रोवाइड करता है फूड एंड शेल्टर. नेक्स्ट एजोला, विच इज स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, वाटर फर्न भी बोलते हैं इसको. इट लिव्स इन एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज एनाबेना एजोले, और ये भी राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है. सो दिस इज एजोला, इट लिव्स इन एसोसिएशन विद एनाबेना एजोले. देन वी हैव साइकस, दैट इज़ अ जिम्नोस्पर्म. इसमें स्पेशल ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं और ये बनाती हैं रूट्स विच आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और उन्हें कहते हैं कोरेलॉइड रूट, और ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में. एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज प्रेजेंट इन द कोरेलॉइड रूट इज एनाबेना एंड नोस्टॉक. सो दिस द फोटोग्राफ विच शोज कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस. सो ये कोरेलॉइड रूट्स हैं साइकस की. देन वी हैव गोनोरा मैक्रोफाइला. गोनोरा मैक्रोफाइला इज एन एंजियोस्पर्म जिसके बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं. इट कंटेन्स नोस्टॉक इन द स्टेम. सो ये भी है नॉन-नोडुलेशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन. दिस द फोटोग्राफ which shows Gonorrhea macrophylla. Then we have symbiotic diazotrophs which are more advanced, that is 100 to 200 times advanced than the asymbiotic diazotrophs. So ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. Symbiotic diazotrophs means जो कि किसी के साथ एसोसिएशन में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. So these are the three ways of nitrogen fixation. This was all about for our today's discussion about nitrogen metabolism. Hope you'll get some idea from this presentation. If you have any questions, queries and any suggestions from this presentation, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.